So we'll be discussing important reports and some indices. Okay, so let's first go to World Bank. So World Bank रो कौन report and यार जदि किछि indices वगैरह किछि जदि बनउचे based on the report ताहले हमें indexes वगैरह देखिए हमें ताले देखिएगा. तो World Bank रो जदि देखियो गोटे तारो गोटे रिपोर्ट आसी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जोटा 2024 रे आस्थिला कोन था ना वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. सी वर्ल्ड बैंक को जेतला हमें देखुचे तो सेथिरे कोन पळे आसी ना सेथिरे आईबीआरडी आसी जाउची एंड आईडीए भी आसी जाउची. ठीक अछि. तो वर्ल्ड डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक रो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट मिडिल इनकम ट्रैप गोटे कांसेप्ट नै के आस्थिले. तो एटा कोन ना इंडिया इज अमंग 100 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एट द रिस्क ऑफ फॉलोइंग इनटू द मिडिल इनकम ट्रैप. तो किए इंडिया भी अच्छी मिडिल इनकम ट्रैप रे where countries struggle to transition from middle income to high income status. तो मिडिल इनकम ग्रुप रो हाई इनकम ग्रुप को ट्रांजिट करिला बेलको बहुत सारा कंट्री को स्ट्रगल होची. सो अमंग 100 कंट्रीज इवन इंडिया इज आल्सो ए मेंबर इंक्लूडिंग चाइना. तो मिडिल इनकम रो स्ट्रगल करछथि हाई इनकम स्टेटस को जोया पाई. This report also notes that only 34 middle income economies have transitioned to high income economies since last 1990s. तो 1990 रु मात्र 34 जण हाई इनकम इकोनॉमी को जाई परछथि. सो दिस इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 रो डाटा. पिलर स्ट्रेटजी 3 पिलर स्ट्रेटजी से कहउची कि ताले तीनटा पिलर कोन ना गोटे पिलर होची इन्वेस्टमेंट, गोटे पिलर होची इन्फ्यूजन एंड गोटे होची इनोवेशन. 3 आईज रो फार्मूला इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूजन इनोवेशन. भलसे मन रखो. इन्वेस्टमेंट दैट इज कैपिटल अक्युमुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करो. इन्फ्यूजन मींस टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन करो. इनोवेशन होची डोमेस्टिक आर&डी एंड एडवांसमेंट एडवांस इंडस्ट्री ऊपर इनोवेशन करो. इंक्लूजन सॉरी इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूजन एंड इनोवेशन ए तीनटा रे ही तबे जो मिडिल ट्रैप कंट्रीज होते जोटा कि लो मिडिल इनकम ग्रुप रो हाई इनकम ग्रुप. तो एक रे तो तमे इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर इन्वेस्ट करो. ठीक अछि. इन्फ्यूजन करो रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन सहित जोटा कि यूपीआई वगैरह रो कांसेप्ट तमे ऑलरेडी देखुथबो जोटा इंडिया ट्राई करूची करिया पे. कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करूची गति शक्ति वगैरह प्रोजेक्ट जोड़ा अछि. देन आर&डी वगैरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट रे इनोवेशन वगैरह करूची. So middle income trap kono na it is a term coined by the World Bank describe a situation where a country experiences economic stagnation after reaching a certain level of middle income status, hindering its transition to a high income status. This stagnation often occurs when a country's initial growth driver like cheap labor, technology catch up becomes less effective and it struggle to innovate and compete with the both low wage and high tech economy. तो गोटे कांसेप्ट आसिला मिडिल इनकम ट्रैप मन रहइबो. मिडिल इनकम ट्रैप आई एम चेकिंग इफ आई कैन गेट सम क्वेश्चन ऑन दैट. सो संगे संगे पढिबा संगे संगे क्वेश्चन सॉल्व करिया जदी किछि थिबो करंट अफेयर रिलेटेड. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा पब्लिश होची 2024 रो मिडिल इनकम ट्रैप विषय से कहउची जोथरे कि इंडिया भी गोटे पार्ट जोटा कि चाइना भी अछि एंड मात्र 34 टा कंट्री आउट ऑफ 100 कंट्रीज से माने सेठु बाहर के आसी परिचन मिडिल इनकम ट्रैप. देखो तो गोटे क्वेश्चन अछि फोरम रो. तो से कहउची कि स्टेटमेंट 1 द वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज इंडिया एज ए लो मिडिल इनकम कंट्री बेस्ड ऑन द ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जीएनआई पर कैपिटा अनुसार वर्ल्ड बैंक कहउची क्लासिफाई करउची इंडिया को लो मिडिल इनकम कंट्री. As per the recent estimate by World Bank, India's per capita income is about $5,000 per annum in 2024. Which of the following statement or following is correct in respect of the above statement? Okay, what should be the answer? The World Bank classify India as low middle income country based on. Now the question here is whether based on GNI or something else that we don't know. Second, as per the estimate by World Bank, India's per capita income is about this much dollar per annum. Per capita is $5,000 per capita. This is little bit shaky, right? कि $5,000 per annum. तमाने ये कितने? Around 5,000 रे आउ 100 गुणी दियो 5 लाख टका. तो तुमको लागुची पर पर्सन 5 लाख टका वर्ष को कमाउथिबे.
डू यू थिंक इन दैट सेंस मु स्टेटमेंट 2 टाको नॉट करेक्ट मारिबी जति स्टेटमेंट 2 टाको मु नॉट करेक्ट मारिबी आंसर मते सी मिलिबो एंड आंसर मते सी मिलुची सी बुझी होची ना बुझी होनी मु सी आई डोंट नो एनीथिंग फॉर एग्जांपल मु एथरे किछि जानिनी बट एटलीस्ट दिमाग तो लगेबी ना कि गोटे इंडिया रो गोटे लोको से कहूची कि इंडिया पर कैपिटा इनकम इज अबाउट 5000 एटा जदि $500 थांदा ना ताहले टिके ठीक अछि कि हां चलो 50,000 जाए गोटे लोकर पर कैपिटा वर्ष को 50,000 जण कमे पारुची बट ये कहूची 5 लाख टका प्रति लोक 5 लाख भाई 5 लाख हेले देन तमे से पीडीएस रे राशन कम बांटिबो हां कि टंकिया चावल कम भी दबो बुझी होची ना बुझी होनी यस सो तो टिके देखि दियो वर्ल्ड बैंक रो एटा रिपोर्ट तो सेथे मु टिके टाको करे भी दोची करंट अफेयर रो कांसेप्ट एटा तो से कुछ ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एज पर द रिसेंट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट बाय द वर्ल्ड बैंक इंडिया इज प्लेस्ड अंडर अ कैटेगरी ऑफ मिडिल इनकम कंट्री तो वर्ल्ड बैंक रो रिपोर्ट अनुसार इंडिया होची मिडिल इनकम कंट्रीज जोटा कि हाई इनकम कंट्रीज को जेबा पई जाउची बट सेटा गोटे ट्रैप गोटे द वर्ल्ड बैंक ग्रुप असाइंस द वर्ल्ड इकोनॉमीज टू फोर इकोनॉमिक ग्रुप कोन कोन ना गोटे होची लो इकोनॉमिक ग्रुप गोटे होची लोअर रू मिडिल आ गोटे होची अपर मिडिल आ गोटे होची हाई so the classification are updated each year on July 1 based on the GNI, very important, based on GNI per capita of the previous year, previous calendar year. GNI measures are expressed in United States dollar using conversion factor derived according to the Atlas method. Okay, any which in current form was introduced 1989. Statement 2. The criterion used by World Bank in defining countries is following. कंट्री जो मानकर पर कैपिटा इनकम अछि 13,935 पर annum and above is called high income country केते टका 13,935 बहुत भल से मन लगे डाटा उडा और रिच कंट्री दोज विथ द पर कैपिटा इनकम अबाउट 1,135 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री 1,135 रु कम जोड़ा सेगुडा लो इनकम कंट्री इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज आज यूएस डॉलर 2650 नॉट 5000 केते यूएस डॉलर 2650 नॉट 5000 पर annum क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्री इंडिया होची जदि तमे देखिबो लो मिडिल इनकम तो हमें क्लासिफिकेशन कोन को देखले गोटा होची लो टू मिडिल आ गोटा होची मिडिल टू हाई करेक्ट नो गोटा होची मिडिल टू हाई आ गोटा फाइनल होची हाई जोटा कि लोअर मिडिल अपर मिडिल एंड हाई लोअर मिडिल टू हाई मींस अपर मिडिल एंड गोटा होची हाई मन रहबो तो हाई माने केते $13,100 एबोव पर कैपिटा एंड 1,135 $1,100 रु कम लो बट इंडिया रो होची $2,650 डाटा मन रखि दियो डन क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्री वर्ल्ड बैंक based on the GNI per capita 2024 is following classification threshold in low income is this lower to middle होची up to 4,495 upper middle होची 4,496 रु 13,935 14,000 and जदि हायर देखिबो मोर देन 14,000 ठीक अछि why does world bank use GNI per capita to classify economy into groups GNI measures are performed on gross domestic as they represent national income as adopted the value of domestic products GNI therefore includes income GNI already हम तो पढै छी जेतले रिवीजन करूथिली करेक्ट नो तो सेथिरे हमें ऑलरेडी करैथिलो yes any doubt in this question मन रहबो India why it is in low middle income country जल्दी 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 नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक रो रिपोर्ट अनुसार ठीक अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज दिस छाड़ दियो बट एथरु हमें ऑलरेडी कले एथरु गोटे पॉइंट मु कोन जानली कि इंडिया $2,650 अराउंड GNI पर कैपिटा करेक्ट नो एंड ए बेसिस रे इंडिया होची कोन ना लोअर मिडिल इनकम ग्रुप तो टोटल केतटा कहला से गोटा होची लो गोटा होची लोअर मिडिल गोटा होची अपर मिडिल आ गोटा होची हाई तो लेस देन 1,100 तो 1,100 रु अप टू नहीं जाओ 4,600 पाखा की 4,600 रु नहीं जाओ अप टू 14,000 एंड $14,000 रु अधिक हो गले हाई मन रहबो डाटा 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 ओके दिस इज डन नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट
किए दउची गोटे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि कंट्री गुडा को चेक करा होची कि से माने को ग्रुप रे आसुछथि देन गोटे अछि इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2025 से कहूची द डेब्ट प्रॉब्लम इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज लो एंड मिडिल जोटा कि इंडिया has shifted from simple debt accumulation to a net resource drain between 2022 to 2024 the low middle income countries paid out around these many 741 billion more in principal and interest than they received in new external financing, the largest negative transfer in the last 50 years. Last 50 years तो basically international debt report रे इंडिया रो बहुत डेब्ट से माने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रे दउचन. State multilateral institutions provide nearly half of the long-term net financing of LMICs, and the bank itself delivered about 36 billion in net flows. Okay. बस जस्ट गोटे जानी था देयर इज ए कांसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट किए बाहर करूची ना वर्ल्ड बैंक एंड डाटा कहूची कि लो मिडिल इनकम कंट्री जो माने से माने तांकर गोटे ह्यूज अमाउंट रो डेब्ट रिपोर्ट रो जना पड़ुची कि ह्यूज अमाउंट रो डेब्ट से माने भरुचंदी जोटा कि लास्ट 50 वर्ष भीतर सबटु अधिक. तो सेकंड को बेसी पढिया गले बिजनेस रेडी 2025 बिजनेस रेडी 2025 बिजनेस रेडी कोन ना केमिति तमे बिजनेस टाको इजीली करि परियो दैट मींस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जोटा वर्ल्ड बैंक बाहर करथला सेटा को बर्तन चेंज करि कि ना तार चेंज हे जेची बिजनेस रेडी रिपोर्ट. तीनटा पिलर ना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पब्लिक सर्विस ऑपरेशनल एफिशिएंसी गोटे प्रॉपर फ्रेमवर्क आनो ताकि लोक आराम से बिजनेस कर पारथुए पब्लिक सर्विस को इंटीग्रेट करो एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को आनो. इंडिया इज नॉट एट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट. इंडिया इज नॉट एट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट. बिजनेस रेडी. Let's see. Try this question. Which of the following is a pilot project launched by Government of India under National Geospatial Policy 2022 to demonstrate the potential application of geospatial technology and innovation in improving the quality of ease of citizen, quality of life and ease of doing business? Which of the following is a pilot project launched by the Government of India under National Geospatial Policy 2022 to demonstrate potential application of geospatial technology and innovation in improving the quality of life of citizens? PM Setu, Operation Dronagiri, Mission Life, Navya. This is geospatial. PM Setu, Navya, Operation Dronagiri, Mission Life. See, जदि मते माने गेस करियो कहबो मु तो ऑपरेशन द्रोणागिरी मारिबी एंड दैट इज करेक्ट बिकॉज़ जियोस्पेशियल बुझियो छी साइंटिफिक से साइंस वाला कांसेप्ट जियो स्टेशनरी माने पडुची साइंस रे मुझे तले पढौतली से तले पढैदिल ना डिफरेंट सैटेलाइट्स तो सैटेलाइट रो किछि जियो सैटेलाइट्स थिले जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट वगैरह तो से कहूची जियोस्पेशियल पॉलिसी एथिरे से कहूची ऑपरेशन द्रोणागिरी ताले देखि दो बिकॉज़ दिस इज करंट अफेयर. The option C is correct. Option Dronagiri, Operation Dronagiri is a pilot project under the National Geospatial Policy 2022 to demonstrate the potential application of geospatial technology and innovation in improving the quality of life and ease of doing business. It is a part of numerous efforts of the Department of Science and Technology, Government of India, in liberalizing geospatial data, developing geospatial infrastructure, geospatial skills and knowledge, as well as standards of implementing the policy in the first phase. Operation Dronagiri will be implemented in the states of Uttar Pradesh, Haryana, Assam, Andhra Pradesh, and Maharashtra, where pilot project will be run and use case will be implemented to showcase the potential application of integration of geospatial data and technology in three sectors: agriculture, livelihood, logistics, and transport. Several government department, industry, corporate, and startup will be partnered with the first phase. So answer is Operation Dronagiri. Then second question, what is this NAPIA? Now, nurturing aspiration through vocational training. Padhya, nurturing aspirations through vocational training for young adolescent girls. Initiative was launched. Kebe na launch heitila 2000 June 24 2025 रे. Navya. It aims to provide skill training and to adolescent girls for job roles in emerging sectors. मने रहबो नाव्या भाई करंट अफेयर तो मु एमिति रे ही करेबी मु एमिति रैंडमली किछि स्कीम पढेबिनी क्वेश्चन नु ही मने रखेबा ठीक अछि. जियोस्पेशियल ऑपरेशन द्रोणागिरी मने रहइबो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाइवलीहुड ऊपर एग्रीकल्चर ऊपर ट्रांसपोर्ट सेक्शन को लॉजिस्टिक वगैरह को देखिया पई बिकॉज़ लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट एटा ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रे पळे आसीबो.
Navya is related to what? Nurturing aspirations through vocational training for whom? For adolescent girls. Correct? No. It will empower them to skill ranging from personal hygiene to communication, workplace safety and financial literacy. It aims to train girl. Who year na 16 ରୁ 18 ବର୍ଷ under PMKVY 4.0 in non-traditional emerging sector like digital marketing, cyber security and others. The aim is to foster confidence, employability and entrepreneurial spirit among them. ठीक अछि ଗୋଟେ awareness type रो adolescent girl ପାଇଁ that is related to Kavya. Nurturing vocational training कि को sector रे ना digital marketing, cyber security ये सब. Option B is also incorrect. What is this? Na PM Setu is a primarily vocational education. Very important again, vocational education and training upgradation. Aim for strengthening ITI NSTI ecosystem through industry led governance. तो PM Setu मन रहइबो vocational training for ITI NSTI ecosystem वाला concept. Navya मन रहइबो Dronagiri मन रहइबो geospatial data and mission life. What is that one? Modern infrastructure and improved training delivery and outcomes. Option D is incorrect. Why? Now mission life is an India led global mass movement to nudge individual and community action to protect and preserve the environment. Life environment, which is lifestyle for environment. Fine. Yes. So we talked about business rating, business reporting report, World Bank replace the ease of doing business report. Pillar holds regulatory framework, public services and operational efficiency. India is not a member. And टिके पूर्वरु आमे पढुतिले वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. करेक्ट नो? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किए पब्लिश करूची ना वर्ल्ड बैंक पब्लिश करूची. इंडिया एथरे पार्ट अछि ना नाही? यस, इंडिया इज ए पार्ट. एंड इंडिया को ग्रुप रे आसुची? कैन आई से लोअर मिडिल इनकम ग्रुप? होंगी नहीं? लोअर मिडिल इनकम ग्रुप. एंड जदि मो कहबी कि गोटे क्वेश्चन भी ऑलरेडी कले कि इंडिया रो पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड डेवलपमेंटल बैंक जेतले से चेक करूची ताले से को इनकम को लेके जाउची? जीएनआई. एम आई राइट? GNI per capita income. होंगी नहीं? And India को पार्ट ऑफ सी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप. And there is a middle income trap वाला concept. ये middle income trap वाला भी बोलचिले ना कार डाउट अछि? Middle income trap. Clear? Next topic. Global economic prospects. तो फर्स्ट होची वर्ल्ड बैंक रो गोटे मु देखिली वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट. देन मु देखिली कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला बिजनेस रेडी रिपोर्ट. देन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स. Global economy, the global growth is projected to 2.6% in 2026 and 2.7% in 2027. 26 27 मन रहइबो. Developing economies are projected to slow down from 4.2 in 2025 to developing economy से माने कमी जिवे war चलछि before edging off to 4.1% in 2027. Low income groups are projected to grow at an average of 5.6% in 26-27. But even that is not enough to close income gaps between advanced economy. The job challenges is one of the report's most important one. 1.2 billion young people will reach working age in developing economy over the next decade. 10 वर्ष भितरे 1.2 billion young people से माने working age को पळे आसीबे. बर्तन कथा जदि तांगा पाखरे employment opportunity नथवा ना then dependency ratio बहुत बढ़ी जिवो. South Asia is projected to grow केतेरे ना 6.2% in 2026 and 6.5% in 2027, making South Asia the fastest growing developing region in the report. तो ए रिपोर्ट रे कहूची ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रे कि साउथ एशिया गोटे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक रीजन बनी पारिबो. ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स. लेट्स सी आउ पर जदि किछ क्वेश्चन. See, how consider the following international reports. Straightforward question. World Development Report, World Bank Group को गुडा करूची. ठीक अछि मु तुम जस्ट करै दोची वर्ल्ड बैंक रो तापरे हम एटा करबा. तो गोटे हमें जानिले वर्ल्ड बैंक रो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट भी दोची किए ना वर्ल्ड बैंक. बिजनेस रेडी रिपोर्ट भी किए दोची वर्ल्ड बैंक. ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स भी से दोची. एंड लास्ट आ गोटे देखोचे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मॉनिटरिंग रिपोर्ट. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2025 रो यूनिवर्सल हेल्थ कोन ना the world has made long run progress in universal health coverage, but the pace is too slow for SDG 3.8.
by 2030. What is SDG 3? That is related to health, right? होंगे नहीं? तो SDG 3 तारे जो यूनिवर्सल हेल्थ जेतले आमे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव को SDG 3.8 टा टिके स्लो चली छि. World has made long run progress. बहुत progress तो करूजी but slow progress. It frames USC universal health coverage as a dual challenge. कौन ना expanding essential health service coverage while stimulating reducing out of the pocket OOP financial hardship. Okay, not important that much. The share of the people facing financial hardship from large and improvising OOP out of pocket financial hardship. मो हातरू केते खर्च होउची is declining. जदि तमे देखिबो तो कौन प्रॉब्लम कौन ना यूएससी एज ए डुअल चैलेंज गोटे होची एक्सपांडिंग एसेंशियल हेल्थ सर्विस सी दीटा को वेरे तमे देखो गोटे तमे हेल्थ सर्विस को एक्सपांड करिवो एट द सेम टाइम तमे जो लोकर असुविधा होची रोग बारे जो लोक पडिची ता पई भी गवर्नमेंट स्पेंड करिवो ता माने दी पट साइड रो स्पेंड हो गोटे होची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रे पैसा खर्च हो प्लस रोग रो बर्तन तमे देखो ना बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना जो थिला या फिर जोटा आयुष्मान भारत योजना रे तमे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनैबो प्लस जदी लोकर 5 लाख जाय ताकू रिकवरी भी दबो जदि तार किछि खर्च करतला 5 लाख तो दी पड़े आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जोटा थिला से गुडा कमुची द शेयर ऑफ द पीपल फाइनेंशियली हार्डशिप फ्रॉम लार्ज एंड इम्प्रोवाइजिंग आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ पेमेंट्स डिक्लाइन फ्रॉम 34% इन 2000 to 26%. This still means that roughly 1 in 4 people globally face serious health related financial strain. India has high burden and catastrophic health expenditure. Very important. India has high burden and catastrophic health expenditure with 15% or more households face catastrophic spending on healthcare annually. Mane rahebo chalo World Developmental Report, Global Financial Stability Report, World Economic Outlook, Global Economic Prospects. See, World Development Report. इतना तो मुझे definitely जानी चाहिए इटा हो जो World Bank. Now, next होगी Global Financial Stability Report, World Economic Outlook, Global Risk Report, Global Economic Prospect. ये क्वेश्चन टा हमें करिबा जस्ट मु अलग गोटा टिके पढै दिला पर सब तो रिपोर्ट पढै दिला पर बट मु चाहूतिले कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ऊपर किछि क्वेश्चन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ऊपर किछि क्वेश्चन जोटा कि ऑलरेडी okay consider the following repairs report published by okay reports and published by ए भलिया क्वेश्चन आसीबो भाई ए भलिया क्वेश्चन आसी जीवो ठीक अछि reports and published by global economic prospects world bank तो ठीक अछि global economic prospects एबे ही कराइतिले ना yes global economic prospects भल से मन रखिता भाई global economic prospects एटा कहारो ना वर्ल्ड बैंक रो economic prospects. How many of the following are published by the World Bank? World Developmental Report, Global Economic Prospects, Global Financial Stability. Financial Stability Report ता ना ठीक अछि चलो आगे एरा सब करि दबा देना आसीबा चलो Global Economic Prospects जो थिरे कोहा होछि कि 1.2 बिलियन पीपल जो माने आगु आसीबे से माने वर्किंग एज पॉपुलेशन को पळे आसीबे साउथ एशिया होछि ग्रोइंग नेशन ग्रो करूछि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रे 6.2 सबटु फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन किए ना साउथ एशिया रीजन ठीक अछि and generally समस्त टिके स्लो हो जायछन ग्लोबल ग्रोथ होछि 2.6% in 2026 and 2.7% in 2027 कोहा वर्ल्ड बैंक इज डन कोहा कार्ड आउट अछि नेक्स्ट I'll go to IMF वर्ल्ड बैंक वाला वर्ल्ड बैंक पर IMF हसिला IMF ओके तो IMF रो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस थिला देटा बट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बहुत बोल से प्रोवाइड्स ग्लोबल फोरकास्ट ऑन जीडीपी इन्फ्लेशन ट्रेड पॉलिसी ट्रेंड्स जीडीपी इन्फ्लेशन ट्रेड पॉलिसी ट्रेंड्स ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शंस 2025 ये कहूची 3% 2026 रे 3.1% ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन व्हाट ना जीडीपी इन्फ्लेशन ट्रेड पॉलिसी सी आईएमएफ रो काम कोन भाई आईएमएफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जदि एपट सेपट हो ताला आईएमएफ बुझियो होंगे नहीं हमारे राइट तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रे सर्विस सेक्टर आसीबो गुड्स भी आसीबो तो गुड्स रे जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करिवो तो गुड जीडीपी रे तो गुड्स भी अछि सर्विस भी अछि होंगे नहीं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रे ये कहूची कि भाई मते देखियार अछि ग्लोबल फोरकास्ट ऑन जीडीपी इन्फ्लेशन ट्रेड केमिति चालुची एंड पॉलिसी ट्रेंड्स ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन 2025 रे 3% से कहूची 2026 रे 3.1% देन देयर इज ए फिस्कल मॉनिटर
फोर्थ थिंग कोन ना मैनेजिंग हाई पब्लिक डेब्ट एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी बैलेंसिंग फिस्कल कंसोलिडेशन वर्सेस ग्रोथ रिपोर्ट तो फिस्कल मॉनिटर गोटे होची किए ना आईएमएफ बिकॉज फिस्कल मॉनिटर जदि तमे प्रॉपर्ली फिस्कल बैलेंसिंग न करिवो अल्टीमेटली काहा ऊपर प्रेशर हबो आईएमएफ ऊपर आईएमएफ को फंडिंग दवा पड़ियो ठीक अछि तो फंडिंग दवा पड़ियो एंड सी वर्ल्ड बैंक जनरली से लोन दिए बट आईएमएफ जो गुडा दिए सॉरी नॉट लोन दिए से माने गोटे डेवलपमेंट प्रपोज रे से पैसा दे दबो ग्रांट्स टाइप रो बट आईएमएफ तुमको लोन दबो भाई तमरो जति एसडीआर थिबो ना सेही अनुसार आईएमएफ पैसा दबो जदि अछि तमरो सेति की कैपेबिलिटी एसडीआर वगैरह रे रखिचो ताले आईएमएफ दबो नहल दबो ही नहीं तेनु से कहउछि कि भाई तमे भलसे मैनेज करो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट स्टेबिलिटी 2026 मेजर कंसर्न 2026 रे से कहला कि राइजिंग रिस्क ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट होछि potential application channel like stocks spreading across the market policy suggestion maintain liquidity support readiness ensure financial sector resilience now see कहउछि financial stability report मने रखा तीनटा रिपोर्ट world economic outlook fiscal monitor global financial stability report तो एट जो global financial stability report थिला एटा के दबो आईएमएफ मने रहबो financial stability world bank थोड़ी दबो financial stability जदि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं ताले बैलेंस ऑफ पेमेंट रे क्राइसिस हबो एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट रे क्राइसिस हो माने इट इज रिलेटेड टू आईएमएफ मन रहबो नेक्स्ट कांसेप्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 30 वर्ष कंप्लीट होची भाई वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट गोटे से दिए वर्ल्ड रे ट्रेड केमिति होची सिंपल जिंसो ग्लोबल ट्रेड आउटलुक भी से दबो वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल रिपोर्ट्स भी से दबो भाई तीनटा गो ट्रेड रिलेटेड एथिरे तो कोनोसी कंफ्यूजन हबार नाही कि केबे वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट किए दबो ग्लोबल ट्रेड आउटलुक किए दबो एंड वर्ल्ड टैरिफ रिपोर्ट्स करेक्ट हो टैरिफ प्रोफाइल रिपोर्ट्स किए दबो सिंपल तले ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेड आउटलुक 2026 रे कोन कहउची ना ग्लोबल ट्रेड 2026 इज प्रोजेक्टेड टू स्लो to 1.9% obviously support he slow down because of the growth in merchandise volume a significant decline from 4.6% growth in seen in 2025 because मिडिल ईस्ट रो जो कांसेप्ट अछि ना मिडिल ईस्ट रे वार वगैरह जोन रे जहां जहां चली छी बर्तन ट्रेड हेई ही पारलो एशिया इज एक्सपेक्टेड टू लीड विथ 3.5% एक्सपोर्ट ग्रोथ to 3.3% and 3.3% import growth while North America imports are projected to remain flat see एशिया पाखरे जदि तमे देखिबो ना एशिया पाखरे स्टील एठी जदि कॉन्फ्लिक्ट हेला ना ताले स्टील भी आ पाखरे पॉसिबिलिटी अछि ये एक्सपोर्ट कर दबो साउथ सार्क रीजन गोडा अछंदी एशियन रीजन गोडा अछंदी हों कि नहीं यूरोप को से पठे परिबो चाइना रशिया ए एरिया रे से ट्रेड करि परिबो मिडिल ईस्ट को छाडी देले एपट को जदि हम ट्रेड रे तमे इशू क्रिएट कलो बट व्हाट अबाउट अमेरिका अमेरिका एपटे पैसिफिक एपटे अटलांटिक देखि जनरली रेड सी देखि से माने आसंदी स्टेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह से माने सब काप करदी बट जना पड़ला कि सेटा तो ब्लॉक करि रखि तो अमेरिका रो ट्रेड रिलेटेड इशू है स्ट्रांग डिमांड फॉर एआई रिलेटेड गुड इज सपोर्टिंग ग्रोथ बट दिस इज ऑफसेट बाय ट्रेड डिसरप्शंस एंड इंक्रीज शिपिंग कॉस्ट डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स इंडिया's जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो at 6.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2026 रु 27 तो ट्रेड रे प्रॉब्लम चली छी सिंपल जिंस ट्रेड रे प्रॉब्लम चली छी एंड चलीबो बिकॉज़ ऑफ द मिडिल ईस्ट टेंशन लागी बट स्टिल ठीक ठाक अछि इंडिया रो प्रोजेक्शन अनुसार 6.6% ग्रोथ रिपोर्ट देखिबो वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल तथ्य कोन होची इट कवर्स टैरिफ्स एंड सिलेक्टेड नॉन टैरिफ मेजर्स ओवर 170 इकोनॉमीज it shows that despite the spread of bilateral and regional trade agreements global merchandise trade still largely runs on most favored nation terms on a most favored nation underlying the continuing relevance of the multilateral trading system तो तम पाखरे रीजनल ग्रुपिंग अछि तम पाखरे बायलैटरल ग्रुपिंग अछि बट स्टिल से रीजनल ग्रुपिंग रे जदि तमे 10 जण अछ ना ता भितरे भी माने मोस्ट फेवर्ड नेशन कांसेप्ट रे चालु छथि about 74% of the global trade is conducted on most favored nation terms despite the existence of many preferential agreements despite new tariff actions and trade remedies this underlines the continuing relevance of multilateral trading system तो multilateral trading system ऊपर भरोसा लोक कर पाउनी मोस्ट फेवर्ड नेशन कि पाकिस्तान मते जदी सपोर्ट करि जे मु पाकिस्तान को सपोर्ट करबी ता पन टैरिफ कमे देबी दिस इज रिलेटेड टू व्हाट मोस्ट फेवर्ड नेशन इंडिया's tariff profile shows a relative high level of protection compared to with many other major economies in 2024 India simply overraised final bound tariff to 37.1% India try करूची प्रोटेक्ट करिया पई ता निज लोक मानको by increasing the tariff rate it simply average MFN applied tariff was 8% overall with 8.6 for agriculture and 7.9 for non-agri तो most favored nation पई से जो tariff लगुची just 8% लगुची India is also a significant market in terms of tariff faced by exporters
जो माने एक्सपोर्टर पठाउछन्ती faced by the exporters in terms of tariff, significant market in terms of tariffs faced by the exporters, जो माने exporter अछन्ती इंडिया रो सेमाने जेतले बाहर को पठाउछन्ती सेतले इंडिया ऊपर भी टैरिफ लागुची। इंडिया's agriculture tariff are much higher than its non agriculture tariff। इंडिया रो जो एग्रीकल्चरल टैरिफ अछि से गुडा जनरली इंडिया बहुत हाई करि रखुची ताकि तारा फार्मर मानकर डिसरप्शन न हो। इज दैट क्लियर? तो रिपोर्ट आउथरे देखो ग्लोबल वर्ल्ड बैंक रो ग्लोबल डेवलपमेंट वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट, बिजनेस रेडी रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मॉनिटरिंग रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक, WHO यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रिलेटेड वर्ल्ड बैंक। देन IMF होची वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, that is global economic prospectus, but this is world economic outlook and global financial stability report, fiscal monitor से होची IMF रो काम। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक, वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल रिपोर्ट 2025 ये सब कहार ना ये सब होची वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 30 वर्ष कम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। ग्लोबल जेंडर गैप देखो जेंडर गैप ये गोटे नुआ कन्सेप्ट निकला जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। एनर्जी ट्रांजिशन इकोनॉमिक फोरम, एनर्जी ट्रांजिशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इंडेक्स, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025। ओके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तार डाटा कौन कहूची ना ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडिया रैंक्ड 131 आउट ऑफ 141 स्कोर 64.4% डाउन फ्रॉम 129 2024 रे केते थिला ना 129 बट 2025 रे केते गला 131 जेंडर गैप 131 चारिटा डायमेंशन रे म पाउछ कोना ना इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट केते मिलिची, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। सी इकोनॉमी एंड पॉलिटी एंड हेल्थ एंड एजुकेशन हेल्थ पॉलिटी इकोनॉमी ए तीनटा कांसेप्ट रे सॉरी चारटा कांसेप्ट रे देखाउ इकोनॉमी पॉलिटी एजुकेशन एंड हेल्थ मन रहबो। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 131 खसी जाई। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया रैंक 71st 63 रु खसी की पुणी 71st। तीनटा पैरामीटर ना इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। Shift from fossil-based energy production and consumption, including oil, natural and gas and coal, to renewable energy sources like wind and solar. Energy transition जेहेतु ये renewable energy को जाउची जोड़ा fossil based थिला से थ्रू कमोई दोची तेणुआर ओवरऑल एनर्जी जोटा देखुचे आमे 71st को खसी जाई से जोटा 63rd थिला। इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी कांसेप्ट। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स ग्लोबल सोशल whether the current generation is living a better life than the previous one, that is what we call social mobility index whether the current generation is living a better life than the previous one। dimension होची again health, education, technology, work and protection। education, health and work ये सब तो इकोनॉमी एंगल रे and technology and protection ये टिके दीटा एक्स्ट्रा रहउची। प्रोटेक्शन ना ठीक ठाक मिलुची ना नहीं, वर्क से माने पाउचों ना नहीं, एजुकेशन ठीक ठाक अछि ना नहीं, हेल्थ ठीक ठाक अछि ना नहीं एंड टेक्नोलॉजी सहित से माने केते इंटीग्रेट हेजनी लिविंग ए बेटर लाइफ देन द प्रीवियस वन। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट और इंडेक्सेस कंट्रीज टू प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटीज टू देयर सिटीजंस कॉम्पिटिटिवनेस केते अछि। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट प्रमोटर ओ माने ना एआई बिग डाटा एंड स्किल ट्रेड ए माने ही आगु फ्यूचर को डेवलपमेंट करूछथि एआई बिग डाटा एंड स्किल ट्रेड्स। Findings 78 million net jobs expected globally, AI uses rising। globally 78 million net jobs expected कोथि पई AI uses rising होची। सी जॉब तो कट हबो बट सिमिलरली जॉब ग्रोथ भी हबो, जॉब सेक्टर नुआ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलिबो बट से गुडा ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन हेइथिबो मन रहबो। पट्टा देखो आमे कले कोन ना यूनाइटेड नेशन सॉरी वर्ल्ड बैंक कले, IMF कले, देन तमर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कले, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कले। ताहार डाउट अछि को आउट रहला UN क्लाइमेट रिलेटेड रिपोर्ट गोटे करियार अछि।
देन आउ किछि ऑक्सफैम वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट वगैरह गला देन डोमेस्टिक रिपोर्ट ठीक अछि तो बर्तन नेक्स्ट जीवा तो क्वेश्चन देखिबा एथिरे देखो कंसीडर द फॉलोइंग वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट किए करूची भाई जल्दी वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक होंगे नहीं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वर्ल्ड रो इकोनॉमिक आउटलुक किए दबो आईएमएफ ना ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एटा छाडी दियो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक तो आंसर 2 और 3 हे पारे 2 और 3 हे पारे बट वर्ल्ड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट रिस्क वन आई विल गो विथ ओनली 2 एंड आंसर इज ओनली 2 बल से देखि दियो The World Bank publishes several important global reports, including World Developmental Report, Global Economic Prospects, Global Financial Development Report, and Poverty and Shared Prosperity Report. Poverty and Shared Prosperity Report टा भी किए दोची World Bank, which are widely used for policy analysis and academic reference. Option 1 is correct. World Bank. It focuses on major global development challenges such as poverty reduction, inequality, human capital, climate change, governance, etc. Option 2 is incorrect. Global financial stability सेटा होची IMF रो, not the World Bank. से कोन करूची ना ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड मार्केट रो करेक्शन ओडा से देखुची एड्रेसिंग इमर्जिंग मार्केट फाइनेंसिंग इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट. ऑप्शन 3 भी इनकरेक्ट. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस हेले वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हेले आईएमएफ. It provides global and regional macroeconomic forecast, growth projection, inflation trend, policy changes, etc. Fourth be incorrect. Na global risk report is published annually by the World Economic Forum. World Economic Forum CA publish करूची global risk report. Global risk report usually ahead of the Davos meeting. It analyze short, medium, and long-term global risks such as climate change, geopolitical tensions, technological disruptions, economic stability. क्वेश्चन दिसुनी क्वेश्चन मु करो ही नहीं क्वेश्चन तो करे दिखली क्वेश्चन ऊपर थिबो क्वेश्चन तो करे दिखली वो सॉल्यूशन पढुची सी कांसेप्ट हैला कि वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट एटा किए पब्लिश करूची वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट सी जस्ट घोषा को कुछ कर परिबो नै ओके सो व्हाट इज आंसर वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट IMF World Economic Report, World Economic Outlook, World Economic Outlook, IMF, World Economic Forum, WEF, correct no Global Risk Report, World Economic Forum, and Global Economic Prospects, World Bank. World Bank. Report and published by World Investment Report, World Bank. Drought Outlook Report, Organization for Economic Cooperation and Development, World Economic Prosperity. Internal IMF, SDG 7, the Energy Progress Report, International Solar Alliance, the energy. See, 4 टा तो मतलब ठीक लगे. World Investment Report, World Bank. I don't know. I'm going with only one, and that is only one is the correct one. Okay. World Bank रे मु investment पढ़िनी. Drought Outlook Report जोटा कि Organization for Economic Cooperation and Development करूची बोली मु जाननी. Global Economic Prospectus जोटा कि वर्ल्ड बैंक करिया कथा सेटा आईएमएफ लिखा है तो तीन टा तो डेफिनेटली रॉन्ग. इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट. ठीक अछि. ड्रॉट आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट. पेयर वन टा तो भूल अछि. द ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD. yes drought outlook report ta dochi OECD. Then global economic prospectus of pair 2 is correctly matched. Pair 3 jodi tome dekhiyo pair 3 that is incorrect. Pair 4 is also incorrect. See mate lagila ki pair 4 ta thik achi pair 2 ta wrong thibo but pair 4 is also incorrect. The tracking SDG 7 the energy progress that will be done as International Energy Agency. Okay सेटा International Renewable Energy Agency से ही करोची not की तमरो
सोलार अलायंस वगैरह किसी कोरोना रे भाई solar alliances is an important body for promoting solar energy, so point 4 is also not correctly matched. Consider the following report published: global economic prospectus, World Bank. Okay, yes. World investment report, World investment report, World economic forum, yes. Global financial report, IMF, correctly match all three. Only two. World investment report कितना भाई? World investment report. World investment is oh sorry. World investment report UN थिला ना? UN थिला. ONTAD वाला. ठीक है जी. Investment report is annual report published by the UN Conference on Trade and Development. मने रखो भाई World investment report that is related to UN. Question करे घुसौची मु. How many of the following indices are published by the World Bank? World Development Report, Global Economic Prospectus. बताओ. Global Financial Stability Report. Financial Stability का IMF को नहीं जाओ. Economic Prospectus, World Bank, World Developmental Report. The following issue: Global Economic Prospectus. Reports periodically. Global Economic Prospectus. World Bank. UPSC Prelims 2015 क्वेश्चन. मन रहेगा? Yes. Okay. So what I will do is I will put this document in the website. Okay, current affairs section को जाइए सेटू तुमको मिल जिवो एटा गोटे पढ़ी नब PDF टा तुमको मिल जिवो सेटू.